Good morning, students. In this class, we are going to see few more numericals on natural convection. So let's help me to interpret the data from the problem which is in front of you. That is problem number 26. So I am writing the data. Horizontal cylindrical rod. How the rod is there? It is cylindrical and it is placed horizontally. Okay, so I will keep like this. Of 4 centimeter diameter. D is 4 centimeter. 4 centimeter means 0.04 meter. Of 60 meter length. What is length? 60 centimeter. Sorry, 60 centimeter. That means 0.6 meter. Is initially at a temperature of 124 degrees Celsius. Okay. So what is T surface? 124 degrees Celsius. Rod. Rod means solid temperature. So surface. Solid surface temperature. So TS is 124. Calculate the rate of heat loss from it. So you have to calculate Q convection. Okay, so this is your required answer. What is further given? If it is exposed to still water at 30 degrees Celsius, so surrounding is water here. So T infinity is how much? T infinity is 30 degrees Celsius. And Nusselt number, they have given two correlations to us. If Rayleigh number value is between 10 raised to 4 to 10 raised to 9, you have to use first correlation. If Rayleigh number is value is 10 raised to 9 to 10 raised to 12, इनके बीच में आती है, so you can use the second correlation. And they have given properties of water. Fluid is water here for determining the dimensionless number. So what is our ultimate goal? Q convection. Now before going to the solution, students, just try to recall the process to solve the natural convection numerical. First step is characteristic length. Second step is Grashof number. Third step is random number. Fourth step is Nusselt number by correlation. Fifth step is H. Sixth step is Q. Seventh step is dt by dt. It is optional. Depending on requirement, you have to use seventh. And number 8 is number 8 may not be required in case of natural convection. That is the case with forced. So what is asked? I think rate of heating or cooling is not asked. They have asked up to Q. So I think we have to go up to step number 6. So let's go one by one. This is the procedure I have outlined, steps. Now go to the LC first. LC. A horizontal cylindrical rod of 4 centimeter and 60 centimeter length is initially at a temperature and it is exposed to still water. Means it is kept in still. Still water means which is not moving water. Okay. So here no velocity mentioned, no mass flow rate, no volume flow rate, means this problem definitely belongs to natural convection. Okay. So what is LC? LC in case of horizontal cylinder, LC is diameter. Just recall the formula. So LC is diameter. So what is diameter? 0.04 meter. Okay, because boundary layer is formed along the diameter. So LC is diameter for horizontal cylinder. Okay. Now LC is over. Now go to the Grashof number. What is Grashof number? Beta z delta t LC cube upon nu square. तो सबसे पहले हमें लगेगा बीटा question mark g I know, delta t I know unknown, LC is known and nu is given in the problem. Okay, nu is not given, so nu is also unknown, question mark. So how to do it? I will calculate beta first. For beta, I require mean film temperature TMF. What is TMF? TS plus T infinity upon 2. So what is TS? TS is around 124. T infinity is 30 divided by 2. I think TMF is coming as 77 degrees Celsius. But 77 plus 273, it comes around 350 Kelvin. You require TMF in Kelvin to calculate beta. That's why I have converted in Kelvin. So beta is 1 upon TMF.
So 1 upon 315 Kelvin, and it comes around 2.857 8571 into 10 raised to minus 3 Kelvin raised to minus 1. Okay, that is the value of beta. Now we require next, g is known to you, 9.81 meter per second square, gravitational acceleration constant. Now we require delta t. What is delta t? Look at here, delta t is surface temperature minus surrounding temperature. So Ts is 124 and T infinity is 30. So 124 minus 30, it comes around 94 degrees Celsius. Okay. Now next, I think LC is already known. Nu I require. What is kinematic viscosity nu? It is dynamic viscosity divided by density. Because they have not given nu in the property. They have given mu. So how to reach to nu from mu मीन्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डायनामिक विस्कोसिटी से कैसे निकालें? तो देखो म्यू और रो दोनों दिए हुए हैं, सो म्यू बाय रो अगर हम करेंगे तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू मिल जाएगा. सो न्यू इज म्यू बाय रो. व्हाट इज म्यू? 3.72 into 10 raised to minus 4, and what is density? 973.7. So answers come out to be 3.8240 into 10 raised to minus 7 meter square per second. Now I know everything. I can easily go to Grashof number. I got beta as 2.8571 into 10 raised to minus 3. I know Z 9.81. I know delta T 94. I know LC. What is LC? 0.04 cube. LC cube. Okay, and nu square. Nu means kinematic viscosity. Just now calculated. 3.8240 into 10 raised to minus 7 full square. If I will calculate it, Grashof number comes around 1.1552 into 10 raised to 9. Now the next step is Prandtl number. Prandtl number is calculated by two formulae, mu Cp by K and nu by alpha. First check whether it is given or not. Okay, Prandtl number is not mentioned in the properties, so you need to calculate. Mu is given, so first formula you are going to use mu 3.72 into 10 raised to minus 4. 3.72 into 10 raised to minus 4, this become mu. What is Cp? Cp is given as 4191. It is already in joule, so put as it is. अगर किलो जूल में होता तो आप जूल में करते, बट यहाँ जूल में है तो मैं एज इट इज पुट करूंगा. एंड डिवाइडेड बाय k. What is the value of k? K is 0.668. 0.668. So Prandtl number अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो the value comes 2.339. 2.339. This is the value of Prandtl number. Now what is next step? Nusselt number. So Nusselt number, there are two correlations, so you have to make a choice. तो रेली नंबर कौन से रेंज में है? 4 to 9 में है या 9 to 12 में है? उसके ऊपर हम नसेल्ट नंबर का कोरिलेशन दोनों में से एक चूज करेंगे. सो हमें बाउंड्री वैल्यू कौन सी है? देखो दोनों कोरिलेशन में कॉमन क्या है रे? 10 raised to 9. 10 raised to 9 इज कॉमन. यहाँ भी 10 raised to 9 है लकीली, तो मेरे लिए आसान हो गया. Grashof number 1.1552 into 10 raised to 9, but remember this is Rayleigh number, sorry, it's not Grashof number. So your next job is to calculate Rayleigh number. How to calculate? Rayleigh number is a product of ZR/PR, Grashof number and Prandtl number. Grashof number is 1.1552 into 10 raised to 9. Prandtl number is 2.3339. If I will calculate, Rayleigh number comes around 2.6961. 2.6961 into 10 raised to 9. Okay, it is also luckily coming in terms of 10 raised to 9. Let's compare. It is definitely greater than 10 raised to 9 because
10 raised to 9 means 1 into 10 raised to 9. It is 2.69. So definitely it is greater than 10 raised to 9. So if it is greater than 10 raised to 9 means I need to use which correlation? I need to use this correlation, because really number is greater than 10 raised to 9. So Nusselt number is equal to 0.13. I got a choice now. 0.13 Rayleigh number raised to 1 by 3. 1 by 3. Just put the values. 0.13 Rayleigh number कितना आया था? 2.6961 into 10 raised to 9 raised to 1 by 3. If I will calculate the value of Rayleigh number, the value of Nusselt number is coming around. Nusselt number is equal to how much? It comes around 180.93. 180.93. Now what is the next step? I think I have reached up to Nusselt number. Next step is to determine the value of H from Nusselt number. What is the formula? H is equal to NUK by LC. This is the formula. NU is how much? 180.93. 180.93. Just 1 minute. 9 into what is K? K is given here in the property table as 0.668. 0.668 divided by LC. How much? You have determined LC as 0.04. 0.04. So value of H comes out around 3021.61 watt per meter square Kelvin. Okay, that is the value of H. Now next step is to determine Q, convection. Use the Newton's law of cooling, that is HA Ts minus T infinity. So H is known to you, Ts is known to you, T infinity known to you, only area is unknown. So what is area? Pi, just check it. What is area? Area means area available for the heat transfer in Newton's law of cooling. So if this horizontal rod is kept in water, it is touching to the peripheral wall, surrounding wall. Yes, side two circles are also available, which are dipped in water, na? So side two circles are also available, but generally when we are solving the problems of cylinder and the length is very large as compared to diameter, the side area we are neglecting. The major area is which one? This one. This peripheral area, which is in touch with the water for transferring the heat. But this side areas we are neglecting because of small cross section. So you can take as pi dl, so pi into d is 0.04 and L is 0.6. 0.04 and L is 0.6. So answer of area is, just 1 minute, I will do it for you. 0.04 by 2.6, it comes around 0.0753. 0.0753 meter square. And if I will put here Q convection is equal to H value is 3021.61, area value is 0.0753, Ts is 124 and T infinity is 30. 124 minus 30, if I will do it, it comes around 21,415 21,415.51 watt. So this is your answers to it for the first problem for today. Okay, anything else they have asked? No, I think the problem is over. Now we'll go to the next problem, student. I will just copy it from the practice questions. Problem number 28 को जाएंगे हम. I will come to the PPT and I'm copy pasting it. ठीक है. Now look.
problem is available for you. Just try to interpret the data. Okay. Consider human body in a vertical position of height 167 centimeter and an average temperature of 37.3. Exposed to atmospheric air at minus 5.7 डिग्री सेल्सियस एट नैनीताल ड्यूरिंग विंटर। बच्चों ऐसे मान लो कि मैं नैनीताल को घूमने गया हूँ एंड आपको पता है नैनीताल हिल स्टेशन है, तो विंटर में तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर माइनस में ही चला जाएगा। इट इज गिवन एज -5.7 एंड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37.3 और ह्यूमन बॉडी कैसे है वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन उन्होंने दिया हुआ है, सोया हुआ नहीं है, इट्स वर्टिकल पोजीशन। तो ह्यूमन बॉडी को अगर मैं सिलेंडर मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये ह्यूमन है ऐसे मान लो सिलेंड्रिकल, बिकॉज द closer shape for the human body is a cylinder. Okay, and height is given as 167 centimeter, so that means how much, 1.67 meter. Okay, at an average temperature of 37, so TS is how much, 37.3 degrees Celsius. And surrounding temperature, what is the surrounding air temperature, माइनस में गया है वो नैनीताल में, -5.7 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, देखो आगे उन्होंने बोला है ह्यूमन बॉडी को आप सिलेंडर समझो, कितने डायमीटर का, 40 सेंटीमीटर का। तो डायमीटर इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 मीटर। ठीक है, हैविंग सरफेस इमिसिविटी, हाँ समथिंग न्यू हियर, इमिसिविटी इज गिवन मीन्स कन्वेक्शन के साथ रेडिएशन भी पिक्चर में आएगा, तो हमें रेडिएशन भी निकालना है और दोनों को ऐड करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। एप्सिलॉन इज 0.3, इमिसिविटी गिवन मीन्स रेडिएशन कंसिडर करना पड़ेगा। कैलकुलेट द टोटल हीट लॉस, देखो टोटल बोला है इसका मतलब कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन, और रेडिएशन क्यों है यहाँ, क्योंकि इमिसिविटी मेंशन्ड है 0.3। बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन निगलेक्ट हीट लॉस फ्रॉम द फीट, मीन्स इसका मतलब ये जो फीट है बॉटम, ये फीट है ऐसे मान लो, और ये हेड है, ये क्या है हेड, और ये क्या है फीट ऐसे मान लो। ओके, तो उन्होंने बोला है फीट से हीट निगलेक्ट कर दो, तो Q bottom is equal to 0 in this case, एंड हेड भी निगलेक्ट कर दो, हेड मीन्स ये टॉप, तो उन्होंने बोला है Q टॉप को भी आप निगलेक्ट कर दो, डेट इज इक्वल टू 0। निगलेक्ट हीट लॉस फ्रॉम फीट मीन्स बॉटम एंड हेड मीन्स टॉप सरफेस। ओके, ये हेड है, वो सारा निगलेक्ट कर दो, तो इज इक्वल टू मैंने 0 किया एंड बाकी बचा मीन्स कौन सा, ये देखो, ये ऐसे मानो कि ये ह्यूमन बीइंग है, ये इसका हेड है और ये इसका फीट है, तो फीट और हेड से हीट निगलेक्ट करना है, तो नेचुरली हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी रे सराउंडिंग को, ये वाले वर्टिकल वॉल से, ये पेरिफेरल वॉल जो है ना, कर्वेचर वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल, इससे ही हीट ट्रांसफर होगी, तो वही एरिया हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कंसिडर करना है। अभी उन्होंने कोरिलेशन सिर्फ एक ही दिया है, तो हमें चॉइस के लिए कोई चांस नहीं है, अच्छा है, हमारा काम कम हो गया, एंड दे हैव गिवन द प्रॉपर्टीज टू डिटरमाइन द डायमेंशनलेस नंबर। सो जस्ट रिकॉल द स्टेप्स। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम में वेलोसिटी नहीं है, प्रॉब्लम में मास फ्लो रेट नहीं है, प्रॉब्लम में वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है नेचुरल कन्वेक्शन का। तो आप स्टेप्स रिकॉल करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पहली स्टेप है एलसी को निकालना, दूसरी स्टेप है ग्राशॉफ नंबर, तीसरी स्टेप है प्रांडल नंबर, फोर्थ स्टेप इज नसेल नंबर बाय कोरिलेशन, फिफ्थ स्टेप इज एच, सिक्स्थ स्टेप इज क्यू कन्वेक्शन, ओके, सेवंथ स्टेप इज dt by dt. Okay, I think this is not asked, rate of heating or cooling is not asked, so we'll stop here. But they have given something extra in this problem, we have to calculate Q radiation also, and then number 9 becomes Q total. Q total is addition of convection plus radiation. Okay, so we have to skip step number 7 and we have to go up to step number 9 in this problem. So how to go to it? Let's see the solution. Go step by step. LC for a vertical cylinder, for any vertical object, either it is cylinder, either it is plate, anything,
which is vertical. LC is always a vertical dimension in case of natural convection. Vertical dimension. So accordingly, what is vertical dimension? Accordingly, vertical dimension is this height, 167 centimeter. So it becomes 1.67 meter. तो LC हो गया. Now number आ रहा है GR का. What is the formula of GR? Beta Z delta T LC cube upon nu square. तो क्या unknown है इसमें? I think beta is unknown, Z is known, delta T is unknown, LC is known, nu is known. So see, nu is given in the property table. So जो unknown है उसको निकालेंगे. Beta, it is a coefficient of thermal expansion. How to calculate it? For that I require mean film temperature first. TMF is Ts plus T infinity upon 2. What is Ts? Ts is surface temperature, means body का temperature, human body का 37.3 plus T infinity. I think it goes in minus ना, नैनीताल है, -5.7 upon 2. If I will calculate it, just a minute, नैनीताल का प्रॉब्लम है ना, so it comes around 15.8 degree Celsius. 15.8 degree Celsius, but I require in Kelvin, so 50.8 plus 273, that comes around 288.8 Kelvin. Okay, because I require TMF, mean film temperature in Kelvin, to calculate beta. So beta is equal to, the formula is 1 upon TMF in Kelvin. So 1 upon 288.8. That answer comes for beta as 3.4626 into 10 raised to minus 3. Unit is Kelvin raised to minus 1 for beta. Next, delta T. Delta T is Ts minus T infinity. What is Ts? 37.3 minus T infinity is minus 5.7. So it comes around delta T is 43 degrees Celsius. If you solve it, it comes around 43 degrees Celsius. तो डेल्टा टी भी हुआ. ये क्वेश्चन मार्क निकल गया, ये क्वेश्चन मार्क निकल गया. I think now everything is known. It is straightforward. Grashof number, बीटा की वैल्यू पुट करते हैं. How much it is? 3.4626 into 10 raised to minus 3 into G की वैल्यू है 9.81, डेल्टा टी की वैल्यू आई 43 into LC की वैल्यू आई 1.67 raised to 3 क्यूब, LC क्यूब, एंड न्यू स्क्वायर. न्यू कहाँ होगा? प्रॉपर्टी टेबल में. इसका स्क्वायर है 13.55 into 10 raised to minus 6. So value of Grashof number is appearing as 3.7051 into 10 raised to 10. This is the value. Now what is the next step? PR, Prandtl number. Prandtl number के दो फॉर्मूले हैं, म्यू सीपी बाई के एंड न्यू बाय अल्फा. बट पहले चेक करो ये वैल्यू Prandtl number की प्रॉपर्टी टेबल में है क्या. You see here they have given Prandtl number directly to you, 0.715. So I don't want to use the formula 0.715. It's directly known to us. फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें. नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट नसेड नंबर. तो नसेड नंबर का कोरिलेशन देखो, एक ही दिया हुआ है तो चॉइस है नहीं हमारे पास, वही यूज करना पड़ेगा. नसेड नंबर इज इक्वल टू 0.56, GRPR 0.25. Nusselt number is equal to 0.56, GRPR raised to 0.25. Let's cross check it. Okay, सही है. तो 0.56 GR 3.7051 into 10 raised to 10 into PR is 0.715 raised to 0.25. The answer of Nusselt number is coming around 225.92. Now from Nusselt number, what is the next step to calculate H? Nu K by LC. This is the formula. So 225.92, the value of thermal conductivity as, property table देखिए,
The K value is given as 0.025 and LC कितना था, vertical dimension 1.67. So the value of H appears to be 3.3821 watt per meter square Kelvin. तो H हो गया. Now what is the next step to get Q convection? Q convection is by Newton's law of cooling, HA Ts minus T infinity. I think H is known to you, Ts is known to you, T infinity is known to you. So only area is remaining. So what is area? Area is, human body is a vertical cylinder. So what is the area? Top and bottom is neglected because that is given, Q top and Q bottom. So only this surrounding area, okay, this peripheral area. What is that value? Pi dl. Okay, so pi into d. D is how much? 40 centimeter means 0.4 meter. And what is height? 1.67. So this answer comes to be, we'll do it for you, pi into 0.4 into 1.67, it comes around 2.0985 meter square. So if I will get Q convection, H I know 3.3821 into area is 2.0985, TS is kitna? 1 minute. I think Ts minus T infinity delta T. So delta T is already known to you. कहाँ? ये देखो. Delta T, Ts minus T infinity already done 43. वापस निकाल सकते हो आप, but I have already calculated. So the answer comes for Q convection as 305.20. 305.20. Okay. But they have mentioned in the problem emissivity also. So we have to go for Q radiation also. What is the formula for Q radiation? Sigma A1 epsilon 1 T1 raised to 4 minus T2 raised to 4, where 1 is source and 2 is destination. Source means what? Hot body, and 2 means what? Relatively cold body. So number 1 is a human body, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है. ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना है? समथिंग 37 डिग्री सेल्सियस अराउंड. एंड सराउंडिंग का कितना है? वो माइनस में है नैनीताल का. तो डेफिनेटली T1 is human body temperature and T2 is surrounding temperature. But remember, in the formula of radiation, we need to use the temperatures in only in Kelvin. That is only allowed. इसका रीजन मैं रेडिएशन चैप्टर में आपको दूंगा. अभी इतना ही याद रखो, जब भी हम रेडिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन. सो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू कन्वर्ट इन केल्विन. T1 is equal to, what is the body temperature? Source temperature 37.3. So 37.3 plus 273, it comes around 310.3 Kelvin. And T2 is given as minus 5.7 degrees Celsius plus 273, it comes around 267.3 Kelvin. And now you are okay to put it in Q radiation. So Q radiation is equal to, what is the value of Stefan Boltzmann constant sigma? That is not going to be mentioned in the problem, remember. You must remember its value because it is a universal constant and its value is 5.67. Okay, you can't say data is unknown. You must know this value. You have to remember this. 5.67 into 10 raised to minus 8. Nobody will give this value to you. Area. What is area? Just now I calculated it. Same area. What is available for convection? The same is available for radiation. So you have already done the calculation. 2.0985. 2.0985 area. Epsilon, how much it is given? Epsilon is given as 0.3 in the problem. Emissivity 0.3 in bracket 310.3 raised to 4 minus 267.3 raised to 4. If I will calculate it, Q radiation comes around 147.43. 147.43 watt. So what is Q total? यहाँ हीट कन्वेक्शन से भी बाहर जा रही है बॉडी से और रेडिएशन से भी जा रही है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे सिंपल. तो Q कन्वेक्शन कितना है? 305.20.
एंड रेडिएशन कितना है 147.43। अगर दोनों को मैं मिला दूं तो आंसर कम्स अराउंड 452.63 watt. So this is our answer. Okay, so here is the end of this problem, students. We'll go to the next problem. इस प्रॉब्लम में नया क्या था बच्चों? Emissivity is mentioned, so we need to calculate the Q radiation also, and we have to add it in Q convections to get Q total heat transferred from the body to the surrounding. That was the new thing in this case. Okay, so we'll try. You can solve problem number 29 on your own. I will solve it because this problem number 30 is important. Why? The reason is its answer is something contradictory. We'll calculate it and then we'll comment on it. Okay, so that is very important to understand. Here answer is not what you can say good enough to justify the condition given in the problem, and we need to comment on it. Whatever the answer comes, by calculation it is correct, but physically that answer is not acceptable. So we need to comment on this answer, and that's why I need to take this problem. Okay, so I will copy paste it for you. Just 1 minute. Some figures are missing here. I will do it again. Now it's okay. Let's help me to interpret the data for this problem. So data, estimate the heat transfer rate from 100 watt. So Q is already given. In most of the problem Q is unknown. In this problem they have given watt, 100 watt. Watt is the unit of heat transfer rate. So Q is given 100 watt. From incandescent bulb. आपको पता है बच्चों incandescent bulb क्या होता है? पूरा अभी वो बल्ब ज्यादातर देखने को नहीं मिलते. आपको इनकैंडेसेंट बल्ब जहां से बहुत हीट लिबरेट होती थी, वो ग्लास वाले बल्ब आपको याद है 60 वैट 100 वैट में आते थे ज्यादातर वो. ओके, इनकैंडेसेंट बल्ब. ओके, लगा तो जस्ट आई विल शो इट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इमेज. जस्ट गिव मी अ मिनट. इनकैंडेसेंट बल्ब की फिगर मैं आपको दिखाता हूँ. होपफुली यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ बल्ब. ये बल्ब आपको पता है. ओके, सो सच काइंड ऑफ बल्ब्स. ठीक है. So that bulb is given of 100 watt. So it is spherical. It is how? What is the shape of the bulb? It is closely approximated to sphere. Okay, bulb. It is closely approximated to sphere for the shape. उसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बल्ब का? 140. मीन्स TS is 140. और आपको पता भी है वो टाइप के बल्ब जो है वो बहुत गर्म होते थे. उसमें ज्यादा वो हम बल्ब क्यों लगाते हैं? लाइट के लिए. लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा हीट में कन्वर्ट होती थी और लाइट उससे कम आती थी. तो इसका मतलब वो इनएफिशिएंट साबित हुए. इसीलिए तो बाद में CFL बल्ब आए और CFL के बाद अभी क्या कौन से बल्ब चल रहे हैं मार्केट में?
एलईडी बल्ब। तो इनकैंडेसेंट बल्ब अभी ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज लाइट में कम एंड हीट में ज्यादा कन्वर्जन हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज अ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें तो लाइट चाहिए, यहाँ ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है, हीट तैयार हो रही है और ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग को, तो इसीलिए ये बल्ब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं। तो आज के जमाने में हम एलईडी बल्ब यूज करते हैं उनके जगह। लेकिन ये प्रॉब्लम देखो हीट ट्रांसफर का है, तो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ। तो लेट्स फाइंड इट आउट हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सच काइंड ऑफ बल्ब्स। एंड एम्बिएंट एयर कंडीशन क्या है? 24 डिग्री सेल्सियस है सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर, टी इंफिनिटी। approximately bulb as 60 centimeter diameter, so sphere का diameter है 60 centimeter, so 60 centimeter means what? 0.6 meter. Calculate the percentage of power lost by natural convection. तो कितना हीट लॉस्ट हुआ परसेंटेज में निकालना है आपको। तो रिक्वायर्ड आंसर इज व्हाट? क्यू कन्वेक्शन तो निकालना ही है, ओके, एंड उसका परसेंटेज निकालना है। तो क्यू कितना जनरेट हुआ? 100 वैट। और ट्रांसफर कितना हुआ? डेफिनेटली कुछ हीट लाइट में कन्वर्ट होगी, तो क्यू कन्वेक्शन विल बी डेफिनेटली लेस देन क्यू, होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ हीट तो लाइट में कन्वर्ट हुई है। तो 100 वैट में से मोस्ट ऑफ द हीट विल गो बाय कन्वेक्शन एंड remaining is converted into what? लाइट। सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, वोल्टेज इंटू करंट प्रोडक्ट, उसमें से कुछ लाइट बन गई और कुछ हीट कन्वेक्शन से लॉस हो गई। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्यू कन्वेक्शन डिवाइडेड बाय 100 वैट इंटू 100, ओके। तो कुछ नहीं, क्यू कन्वेक्शन तो निकालना ही, एक स्टेप हमारी बढ़ गई। यूज फॉलोइंग कोरिलेशन, एक ही है तो चॉइस नहीं, अच्छा है, एंड प्रॉपर्टीज आर गिवन टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स रिकॉल द स्टेप्स इन नेचुरल कन्वेक्शन। यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ कोई मास फ्लो रेट नहीं है, यहाँ कोई वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम नेचुरल कन्वेक्शन का बन जाता है। यहाँ कोई फोर्सफुली एयर पुश नहीं कर रहा है बल्ब के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम नेचुरल कन्वेक्शन का है। सो व्हाट आर द स्टेप्स? सबसे पहले हम निकालते हैं एलसी, सेकंड में निकालते हैं हम जीआर नंबर, थर्ड में निकालते हैं हम ब्रैंडन नंबर, फोर्थ में निकालते हैं हम नसेल्ट नंबर बाय कोरिलेशन, फिफ्थ में निकालते हैं हम एच, सिक्स में निकालते हैं हम क्यू कन्वेक्शन। यहाँ रेडिएशन का कोई सवाल नहीं, क्योंकि एमिसिविटी उन्होंने मेंशन नहीं की हुई है प्रॉब्लम में, ओके। सेवंथ इज dt बाई dt, तो आई थिंक ये भी नहीं पूछा है हमें, रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग, तो इसको भी गए, ये स्टेप भी गई। और रेडिएशन का तो सवाल ही नहीं, क्यों रेडिएशन पूछा ही नहीं है उन्होंने, क्योंकि इमिसिविटी नहीं दी हुई है। तो यहाँ तक ही हम जाएंगे क्यू कन्वेक्शन तक, और उससे हम परसेंटेज हीट लॉस निकालेंगे, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले एलसी। सो एलसी फॉर स्फीयर, LC for sphere is coming as diameter. Recall the formula of natural convection. LC for sphere comes as diameter, and that diameter is given as 60 centimeter, means 0.6 meter. Okay, LC हो गया। उसके बाद GR, GR is beta Z delta T LC cube upon nu square. Let's tick mark and question mark. Beta is unknown, so question mark, G is known, delta T is question mark, LC is known, nu is known from the property table. You see here nu is given. So what is beta? उसके लिए हमें लगेगा min film temperature, TMF. It is Ts plus T infinity upon 2. What is Ts? 140 plus 24. 140 plus 24 divided by 2. It comes around 82 degrees Celsius. How much? 82 degrees Celsius. But I require it is in Kelvin, so I will add 273. It comes around 355 Kelvin. Okay. So what is beta?
it is 1 upon TMF in Kelvin. So 1 upon 355. The answer comes around 2.8169. 2.8169 into 10 raised to minus 3 Kelvin raised to minus 1. ये हुआ बीटा. तो I think ये क्वेश्चन मार्क गायब हुआ. G is known to you, delta T. What is delta T? Delta T is Ts minus T infinity. Ts कितना है 140. T infinity कितना है 24. तो it becomes 140 minus 24. I think it is 116 degrees Celsius. So I got delta T also, and I am ready to use all these value in Grashof number. So beta is 2.8169. ये क्वेश्चन मार्क गिर गया into 10 raised to minus 3. G is 9.81. Delta T is 116. LC cube. LC is how much? 0.6 cube and divided by nu square. Bracket raised to square. What is bracket? Nu means 21.46 into 10 raised to minus 6 whole square. So if I will calculate this value, Grashof number turns out to be 1.5034 into 10 raised to 9. Now the next step is to determine Prandtl number. Prandtl number is determined by the formula mu Cp by K nu by alpha. But check whether it is given or not. I think Prandtl number is already mentioned 0.699. So you need not to calculate, it is given directly. तो इस फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं है, हमें डायरेक्ट रेडीमेड अवेलेबल है वो 0.699. इसके बाद आता है नसेल्ट नंबर. नसेल्ट नंबर का एक ही कोरिलेशन है तो चॉइस नहीं है, उसी को यूज करो. नसेल्ट नंबर इज 0.60, रेली नंबर रेज़ टू 1/4. नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.60, रेली नंबर रेज़ टू 1/4. तो हमें यहाँ रेली नंबर लगेगा. तो रेली नंबर क्या है? It is the product of Grashof number into Prandtl number. Grashof number is 1.5034 into 10 raised to 9 into Prandtl number is 0.699. So Grashof number turns out to be, Rayleigh number turns out to be, Rayleigh number is equal to 1.0509, 1.0509 into 10 raised to 9. So नसेल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.60. रेली नंबर की वैल्यू कितनी आई 1.0509 इंटू 10 रेज़ टू 9 रेज़ टू 1/4. If I will calculate the Nusselt number, answer is coming around 108.02. 108.02. Now after Nusselt number, how to get H from Nusselt number? Nu K by LC. What is Nu? 108.02. What is K? See the property. K is given as 0.0303. 0.0303. And what is LC? LC is 0.6 meter. 0.6. So H comes around 5.4555. 5.4555 watt per meter square Kelvin. H हुआ. H के बाद what is the next step? Q. H के बाद क्या होता है? Q. 1 minute. There is some issue with net connectivity. Just bear with me. I will just rub these things. ठीक. So Q is equal to, by Newton's law of cooling, HA Ts minus T infinity. Okay. तो इसमें H पता है हमें Ts पता है, हमें T infinity पता है, ओनली अननोन इज एरिया. ओके. ये बल्ब है, इट इज स्फीयर, तो उसका सरफेस एरिया क्या हुआ जो एयर के कांटेक्ट में है? एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स? 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई आर क्या है रे? d/2. diameter divided by 2. What is diameter? 0.6. So 0.6 divided by 2 ये हुआ रेडियस और उसका स्क्वायर. So if I will solve it, the answer comes around, just minute, 4 into pi
into, it comes around 1.1309, 1.1309 meter square. Okay, area is this much. Now, if I will put this in the formula of Q, I will get, how much is the H? 5.4555. 5.4555. Area is, I know, 1.1309, and delta T, Ts minus T infinity is already calculated here. Look at here, Ts minus T infinity is 116. And if I will calculate it, it comes around 715.72. 715.72 watt. Okay, that is Q. Now, this bulb is of 100 watt. Means electricity which is given to lighten this bulb is 100 watt. 100 watt bulb का मतलब क्या है? Voltage into current product is 100 watt. And Q convection from this bulb is appearing to be 715.72 watt. Student, is it possible in reality? अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी 100 वैट है तो इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्ट इनटू टू थिंग्स, वन इज लाइट एंड अदर इज हीट. तो इसका मतलब जो क्यू कन्वेक्शन से बाहर जाएगा वो 100 वैट से नीचे ही होगा. यहाँ 715 वैल्यू 100 वैट के ऊपर है. इसका मतलब प्रॉब्लम में कुछ तो भी गलती है. ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें से कुछ हीट लाइट में कन्वर्ट हुई है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी लाइट में कन्वर्ट हुई है और कुछ इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हुई है. यहां तो उल्टा हुआ है, हीट इलेक्ट्रिसिटी से भी ज्यादा है. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तो इसका मतलब गलती क्या हुई है? गलती हुई है, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आप डेटा के ऊपर, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है. अगर आप डेटा देखेंगे, ये है इनकैंडेसेंट बल्ब. थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंटरनेट इमेज भी दिखाई बल्ब की. बल्ब का डायमीटर कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग जीरो बल्ब लगाता है. 40 वैट का बल्ब लगाता है, 60 वैट का बल्ब लगाता है, 100 वैट का बल्ब लगाता है, 1000 वैट का वो बड़ा बल्ब लगाता है. ओके, तो बल्ब की हाइट रियलिस्टिकली 60 सेंटीमीटर हो सकती है क्या? 60 सेंटीमीटर मीन्स 30 सेंटीमीटर का एक फीट होता है, देखो. एंड 60 सेंटीमीटर कम्स अराउंड दिस मच. इतना बड़ा बल्ब तो मैंने कभी नहीं देखा है. तो इसका मतलब ये जो डायमीटर है 60 सेंटीमीटर प्रॉब्लम में वो गलत है. एक्चुअली इट हैज टू बी 6 सेंटीमीटर. कितना होना चाहिए? वो डायमीटर होना चाहिए कितना? 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर मीन्स उसका वैल्यू 0.06 मीटर आएगा. अगर ये वैल्यू लेके अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर ऑफ क्यू कन्वेक्शन is less than 100 watt, and then you can easily calculate how percentage power lost. How to calculate? Percentage power lost is Q convection upon Q original. How much it is? That is electricity, 100 watt into 100. If you recalculate it by taking new diameter and put it here, this will be your final realistic answer. In this case, you will definitely find Q convection is less than 100 watt. So this is very, very important to understand in this problem. Here you can comment and close the problem. But if same problem is coming and you are calculating it as 715, full marks are allotted to you. You just comment it is not possible in reality. Okay, so that's it for today, students. With this, we are closing the numericals of natural convection. If you are having any query, you can just call me or WhatsApp me. I will answer your query. Thank you.